Hello everyone. Manur, we will talk tonight over WhatsApp and we will set time for tomorrow. ठीक है? Uh, आज हमारा टॉपिक जो है that is ethics and ownership, which is chapter 7 in new syllabus. And let us start. देखते हैं क्या है इसमें. देखें, ethics and ownership chapter 7 है. Candidates should be able to show understanding of the need and purpose of ethics as computing professional. Understand the importance of joining professional ethical body, including British Computer Society and IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो हार्डवेयर में स्टूडेंट्स जाते हैं, वो अपनी कॉलेज लाइफ में ही इन बॉडीज से मुंसलिक हो जाते हैं, दे बिकम मेंबर. सो एक इसमें है एसीएम, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग, और दूसरा है ये IEEE. इसके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं. ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी, तो क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो ब्रिटिश है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी जो है वो उससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, जो कि universities में है. We will talk about it. Show understanding of the need of to act ethically and the impact of acting ethically or unethically for a given situation. ये वो एरिया है जो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा कि एक सिचुएशन बन रही है, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन है कि ये जो एसीएम है या IEEE है, इनके जो लॉज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करने वाला फैक्टर है कि आप लोगों को ना याद करना पड़ेगा. तो अगर आप उसको प्रॉपर से याद कर सकते हैं तो फिर रिलेट करने के लिए बहुत आता है कि कौन से लॉज के साथ कौन सा रूल जो है वो मैच कर रहा है. वी विल डिस्कस अबाउट इट शॉर्टली. शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर कॉपीराइट लेजिस्लेशन. कॉपीराइट आपका वो राइट होता है जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, दूसरा उसको कॉपी ना करे तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है. तो उसकी क्या लेजिस्लेशन है, क्या लॉज, वी विल डिस्कस अबाउट इट. शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. जब कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो दूसरे आपको अंडर अ लाइसेंस, पर्टिकुलर लाइसेंस उसको इस्तेमाल करते हैं. तो लाइसेंसेस में हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव लाइसेंसेस होते हैं, शेयरवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हैं. और फिर लास्ट पार्ट इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट एरियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे परसेप्शन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो सकती है, लिंग्विस्टिक्स में यूज हो सकती है, और आपके पास जो है वो डायग्नोसिस में यूज हो सकती है. इसी तरीके से आपके पास जो है वो कंक्लूजन, किसी चीज़ की कंक्लूड करने के लिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एआई यूज हो सकती है. और फिर लास्टली के जो एआई का जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो क्या आएगा. सो दिस इज ऑल थ्योरी चैप्टर, but remember you will always have a question in every exam from this chapter in P1. So let us start with again with few important terms, keywords, or as usual with their definitions.
ethics and ownership. Now, first of all, there are key terms. जैसे कि हमारे पास पहली की टर्म है लीगल. Legal covers the law, whether or not an action is punishable by law or not. Legal covers all the laws relating to permissible by law. Whatever the task that you do, if it is legal or it is illegal, it has nothing to do with कि आपको उसकी सज़ा मिलती है या नहीं मिलती. जो हम एक्ट परफॉर्म करते हैं, वो एक्ट अगर आपकी गवर्नमेंट ने उसको, नो मैटर हाउ गुड यू थिंक दैट दैट इज, अगर आपकी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती तो वो लीगल नहीं है. ठीक है. सो दैट इज परमिसिबल, समथिंग दैट इज परमिसिबल बाय लॉ. ठीक है. Whatever that is related to the permission of law. Morality, morals. So, what is morality? It concerns questions of right and wrong, and is more often thought of in relation to personal and individual choices. हम कहते हैं ना act with morality, मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करें जो दूसरों को बुरा लगे, जिसको दूसरों से बाद में नुकसान हो, जो ऑकवर्ड हो, जो सिचुएशन के हिसाब से दूसरों के लिए कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना प्रोड्यूस करे. दैट इज कॉल्ड मोरालिटी. Huzaifa, I already have sent you the list. Don't ask me again and again, Bitte. So, morality is an understanding of the difference between the right and wrong, often found in personal benefits or beliefs. All right. So, कोई कह सकता है कि अगर वो कोई काम कर रहा है और वो काम उसके लिए आसान है और वो उसको अच्छा लगता है और उसके ख्याल में उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, और दूसरा कहता है कि नहीं ये तो काम सही नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है. लाइक मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इन politics, they actually hit this phenomenon. So morality is the belief of right and wrong, but from personal perspective. Third one is ethics. So ethics also concerns with the question of right and wrong, but it is more often used in professional way. जैसे morality तो एक personal choice है ना. When it comes to professional, let's say moral standards, so then it is said to be ethics. So moral principles governing an individual or organization behavior, such as codes and conducts. So ethics is the same whether something is wrong or right, but in terms of professional deeds. All right. So अगर आप एक हैकर हैं लेकिन आप दूसरों को बचाते हैं तो वो एथिक्स के अंदर आ जाएगा. लेकिन अगर आप एक हैकर हैं, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी खतरनाक एथिक्स के अंदर आ जाएगा. मतलब दैट इज नॉट गुड प्रोफेशनली. ओके, दैट इज इलीगल एज वेल, but moral के हिसाब से भी that is wrong, but ethically, professionally, that is wrong as well. So ethics is basically moral principles governing an individual or organization's behavior. All right, such as code of conduct. All right. So now ethics के बाद हम आ जाते हैं culture. This culture refers to the attitude, values, practices shared by a society and the group of people. जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ड्यूरिंग द क्लास
There is no culture of use of slangs, bad language, singing songs. All right. But when you get out, you are on your own. So you have to actually act with morality under the ethics of a school. That is how we define the culture. It is about the attitudes and values and practices of group of people. Let's say we have got one religious culture. ये इसमें allowed है, इसमें allowed नहीं है. We have one ethnic culture कि हमारे यहाँ ये होता है और हमारे यहाँ वो होता है. ठीक है. And then country wide culture कि हमारी कौम ये करती है और हमारी कौम वो करती है. So जो common practices हैं which people perform as a group, that group might be the religious group, the ethnic group, the kabila, the शहर, the मोहल्ला, ये हमारी कौम, whatever, that is culture. So all attitude, values and practices shared by a group of people or a society, that is called culture. Now, intellectual property rights. Intellectual property rights. Now, let's first define what is intellectual property. Intellectual property is basically something that you have produced by yourself. आपने एक गाना लिखा, एक song, आपने एक poem लिखी, एक riddle लिखी, एक software लिखा, और वो आपने लिख दिया, ठीक है ना? या आपने कोई algorithm बनाया, या आपने mathematics के अंदर कोई solution produce करी, कोई आपने particular way of solution बनाया. कि जो कुछ भी आपने बना दिया, चाहे कागज पे बनाया, चाहे फिजिकल बनाया, चाहे उसका नक्शा बनाया, चाहे उसका ब्लूप्रिंट बनाया, चाहे उसका आइडिया पेश किया लेकिन लिख दिया, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. बट अगर आपके जहन में कुछ है और आपने आके जफर से डिस्कस किया और जफर ने उस पर कोई चीज बना दी, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, वो जफर का राइट है. So anything which is on paper, which is produced actually, and it is not an idea yet, which is inside your conscious, it is actually having some physical footing on paper or whatever form, that is your intellectual property. So government then provides you protection. ठीक है ना? तो उस protection को हम कहते हैं IPR या intellectual property right. ठीक है? So rules governing an individual's ownership of their own creation or ideas, prohibiting to copy, for example, software without owner's permission. All right? So rules governing an individual's ownership of their creation and ideas. Ideas not as in the mind, but on the piece of paper. Prohibiting copying of such, and like software, if you have written, no one can use it without your permission. That is intellectual property right. And then comes privacy. Privacy is the right to keep your things private, your personal information and data secret, until or unless you want to reveal it. That is yours. That is privacy. So the right to keep personal information and data secret, and for it to not be unwillingly scattered or told to anyone. All right, so that is privacy. So if you are being hacked, you are having compromised privacy. Think that way. ठीक है? Plagiarism. Plagiarism is sort of producing someone else's work as your own.
ये ज़्यादातर हम लोग जब असाइनमेंट्स वगैरह जमा कराते हैं, हम नेट पे जाते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं, या कोई आपको लिखा हुआ मटेरियल देता है, वो मटेरियल है किसी और का और उसने उसको बताया नहीं कि ये कहीं और से उसने कॉपी किया है, सो दैट इज सेड टू बी प्लेजरिज्म। इट इज मोर ऑफन इन एजुकेशन वर्ल्ड, ऑलराइट। प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी ये प्लेजरिज्म हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो एजुकेशन वर्ल्ड में होता है। So plagiarism is an act of taking other person's work and claiming it as your own. That is plagiarism. All right, and not giving others credit for their work. That is plagiarism. Okay, and then we have got ACM, Association of Computing Machinery. All the programmers in the universities and their professional life, they get attached to ACM. अगर आप यहाँ पर कराची में फास्ट जाते हैं या IBM में CS करते हैं या आप कहीं और नस्ट वगैरह जाते हैं, you are related to software, then there are chances that mostly you will become the part of association of computing machinery. But if you are related to hardware side, you are to become an engineer, then you will become part of IEEE, Institute of Electric and Electronic Engineers, IEEE. All these standards which are made nowadays, जैसा कि आपके पास USB है, HDMI है, जितना भी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर फ्रंट पे काम होता है, that is all produced by IEEE. All right. So these are few things that I wanted to talk about before we go any further. Now let's talk in detail. So computer ethics. Computer ethics are the principles set out by regulators, all right, which need to be practiced. So computer ethics is a set of principles set out to regulate the use of computers, all right, set out for the use of computers, cell phone included by the way, all right. सो कंप्यूटर एथिक्स ये है कि आप क्लास में बैठ के जो है वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बाहर जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फ़ोन को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने कंप्यूटर को दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप किसी दूसरे का काम अपने काम से, अब आप फ़र्ज़ करें आपने अपना सेल फ़ोन निकाला और आपने किसी और के काम की तस्वीर खींची और उसको जल्दी जल्दी कॉपी किया और टीचर को प्रेजेंट कर दिया, that is said to be the bad use, bad ethics, bad computer. So intellectual ये जो है इसके अंदर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर आप जो है वो दूसरों की प्राइवेसी को खराब नहीं करें। और तीसरा हमारे पास आता है प्लेजरिज्म। तो ये तीनों एरियाज जो हैं वो कंप्यूटर एथिक्स कवर करती हैं, एंड वी हैड इनफ ऑन इट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर कॉपिंग सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर ये आ गया, और प्राइवेसी के अंदर आपके पास आ गया कि आप किसी की हैकिंग ना करें, किसी और का जो है वो यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल ना करें, और किसी और के बिहाफ पे आप कोई कंप्यूटर में ऐसा काम नहीं करें, या फिर जो है वो आप जो है प्लेजरिज्म में आ जाते हैं, तो आप किसी और के काम को अपने काम के तौर पे प्रेजेंट ना करें। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कंप्यूटर के इस्तेमाल का इफेक्ट जो है वो सोसाइटी पे, लोगों पे जो है वो ना पड़े। आपकी वजह से कोई क्लास से ना निकाला जाए, आपकी वजह से कोई स्कूल से ना निकाला जाए, आपकी वजह से किसी को मॉरली या सोशली या इमोशनली कोई नुकसान ना हो आपकी किसी हरकत की वजह से, जिसमें आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी की इंफॉर्मेशन रिवील कर दें, आप किसी को सोशल मीडिया पे जो है वो बैड पोर्ट्रे करें,
प्राइवेसी उसकी ख़राब करें या उसके काम को अपने काम के तौर पे प्रोड्यूस करें। सिंपली इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल जॉब लॉसेस, सोशल इम्पैक्ट्स, इमोशनल, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया कंप्यूटर एथिक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो हैं वो प्रोफेशनल एथिकल बॉडीज, जो मैंने अभी आपसे बात करी, हमारे पास जो प्रोफेशनल एथिकल बॉडीज हैं ये हमें ये बताती हैं, ये ऐसे इदारे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें किस किस तरीके से अपने आप को बीइंग द प्रोफेशनल ऑफ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटिंग, किस तरीके से अपने आप को जो है ना वो काबू में रखना है, लोगों को फायदे पहुंचाने हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो ब्रिटिश, अब आपके पास अभी इसमें आपने देखा था अपने सिलेबस में कि हमारे पास ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी थी। इट इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी सेटअप इन द यूके। अब ये हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि हम बेसिकली जो यूके का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। इनिशियली टू रिप्रेजेंट द राइट्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द आईटी फील्ड एंड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। अच्छा, ये दोनों बातें हैं, इनके भी राइट्स जो लोग काम कर रहे हैं और उनके भी राइट्स जिनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये सुना कि एक ये था कॉल सेंटर। बेसिकली कॉल सेंटर्स तो दूसरे कंट्रीज में होते हैं ना, तो दूसरे कंट्रीज के लिए काम कर रहा है। तो उस कॉल सेंटर ने लोगों के जो ईमेल्स हैं वो स्पैमर्स को $1 ईच सेल आउट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि पूरे कंट्री के जो कॉल सेंटर्स थे उनके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया। सो जिस बंदे ने, ऑब्वियसली कंपनी के लेवल पे तो नहीं हुआ होगा, ये इंडिविजुअल के लेवल पे हुआ होगा, लेकिन जिस कंपनी के अंदर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है, क्या उस कंपनी ने इसकी इंडिविजुअल की कोई ट्रेनिंग करी थी, इसको जो है वो एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स समझाए थे, इसकी कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई थी, इसको मोरल हाई करने के लिए, गुड प्रैक्टिसेस के लिए क्या इसको कोई लेक्चर्स दिए गए थे या इसका कोई एक्सपोजर था फॉर सच? That is basically the part of such ethical bodies, they train. So there are a number of professional bodies representing individuals working in the field of computing and information technology that have developed their own codes of conducts to which members are expected to adhere. Belonging to one of these organizations demonstrates your professional integrity by showing that you are committed to upholding the standards these professional bodies describe. All right, so when you will be in university, if you are having computer science, you will become the part of this professional body. सारे doctors जो हैं वो भी एक professional body का हिस्सा होते हैं जो सारे डॉक्टर्स को कंट्री वाइड देखती है। सारे इंजीनियर्स भी किसी एक बॉडी का हिस्सा होते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जैसे। इसी तरीके से सारे प्रोग्रामर्स भी किसी प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा होते हैं। तो पहली जो ये है ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी, तो इसका जो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो 4 एरियाज को कवर करता है। नंबर 1, ये कवर करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो पब्लिक के इंटरेस्ट में करेंगे, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा आपके पास आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, और आपके पास इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एंड इंटेग्रिटी। थर्डली आपके पास होना चाहिए that जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं आपकी ड्यूटी उनके साथ है, ठीक है, और आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो उनके हक में कर रहे हैं, आप उनके अलावा नहीं कर रहे हैं। और फिर फोर्थ बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर ड्यूटी टू योर प्रोफेशन। आप अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल बन गए हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हों, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर
ना दें, लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश करें, आप अपना काम बेहतर से बेहतर करें। सही है, ये आपकी ड्यूटी है आपके प्रोफेशन की तरफ। Then comes IEEE, the Institute of British Computer Society, the Institute of Electrical and Electronics Engineers. ये दूसरी, इसको हम कहते हैं IEEE. This organization is very active all over the world, and there are millions of professionals, they are attached to this particular body. This is called the Institute of Electrical and Electronic Engineer, was set up in the USA with the aim to raising awareness of ethical issues. Aims: raising awareness of ethical issues. Number 2, promoting ethical behavior among professionals. Promoting ethical behavior among professionals. Thirdly, ensuring, again, engineers and scientists respect the need of for ethical behavior. So you see, when the use of something grows too much, जैसे हमारे पास कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, तो उससे दूसरों को बचाना भी तो है। आपके पास जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो फिर वो रेगुलेट होती है, उसको समझाया जाता है, उससे कोई गड़बड़ ना कर दे, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, उसका बेहतर इस्तेमाल करे। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ IEEE के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, ये आपको याद करने हैं बेसिकली। तो इसको देखते हैं, ये देखिए IEEE के, या IEEE का स्लोगन देखें कितना, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, IEEE के कोड ऑफ एथिक्स हैं, we the members of IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting personal obligations to our profession, its members, and the communities we serve, we do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct, and agree to what? There are 10 IEEE Code of Ethics rules जो आपको follow करने हैं. Number 1, that connects you to uphold the highest standards of integrity, responsible behavior, and ethical conduct in professional activity. This you have to actually remember, to hold paramount the safety, health, and welfare of the public. So this is public interest. To strive to comply with ethical design and sustainable development practices, to protect the privacy of others, and to disclose promptly factors that might endanger public or the environment. To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technology, including intelligence systems.
कि लोगों को बताएं कि आप इससे क्या काम किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आपको वो काम सिर्फ अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए करना है और दूसरों की बेहतरी के लिए करना है, उससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। Number 3, to avoid real and perceived conflicts interest whenever possible and to disclose to affected parties when they do exist. इस पे हम बात करेंगे जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचता है। तो कुछ देखें, हमेशा अभी आपसे मेरी क्या बात हुई थी, morality. When something is good and in better uh, when something is good and it is better for some people, it might not be better for others. Others might have objection for it. तो ऐसी सूरत में कि जब कुछ लोगों को हो फायदा और कुछ को ना हो, तो आपकी अगर क्रिएशन दोनों में से किसी भी ग्रुप के लिए तो दूसरे को कम से कम नुकसान पहुंचाए, कम से कम फायदा नहीं पहुंचाए तो नुकसान भी नहीं पहुंचाए। टू अवॉइड रियल परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, टू अवॉइड अनलॉफुल कंडक्ट इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड टू रिजेक्ट ब्राइबरी इन ऑल फॉर्म्स, यानी कि किसी से काम जो है वो किसी को नुकसान अगर पहुंच रहा है और आप काम रोक रहे हैं तो आपको ब्राइबरी नहीं लेनी, यानी कि किसी से रिश्वत लेके और आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचाए। टू सीक एक्सेप्ट एंड ऑफर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्निकल वर्क, आप जब भी कोई काम करें दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, अगर कोई आपसे उस पर कोई डिस्कशन करता है तो उस डिस्कशन के अगेंस्ट में अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट करें और अपने टेक्निकल काम को इम्प्रूव करें। ऑलराइट, सो बेसिकली to acknowledge and correct errors, to be honest and realistic in stating claims or estimates based on the available data. अब ये ना हो कि आपने जो क्लेम्स करें वो बेटरमेंट ऑफ द डेटा, जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है कि समथिंग इज गोइंग बेटर इन गुड डायरेक्शन बट वी डोंट सी एनी, तो हमारे जहन में यही होता है ना कि यार ये हमसे सही बात नहीं कर रहे, तो ऐसी बात नहीं कर रहे। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव आवर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये मैंने आपसे बताया था कि ये भी आपकी ही एथिक्स का हिस्सा है कि आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ताकि आप जब इम्प्रूव करेंगे आप नई चीज़ें सीखेंगे, उन नई चीज़ों को यूज़ करके आप नए जो लोगों के लिए काम प्रोड्यूस करेंगे वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा और अपने आप को आप अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करने के बाद आप जो है उन अपग्रेडेड एलिमेंट्स को प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ वर्क। सो आपकी क्वालिफिकेशन हमेशा जितना भी आपके हाथ में है वो बढ़नी चाहिए। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव टेक्निकल कॉम्पिटेंस and to undertake technological tasks for others, or if qualified by training or experience, or only if qualified by training and experience। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके आपने ट्रेनिंग और नहीं ली और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आफ्टर फुल डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टिनेंट लिमिटेशन। आप अगर किसी का कोई काम पहली बार करने जा रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो लोगों को पता होना चाहिए कि उनके एक्सपेक्टेशंस हट ना हो, अनएथिकल है। ये हो गया था हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है इक्वलिटी के लिए, इक्विटी के लिए। टू ट्रीट ऑल पर्सन्स फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट, टू नॉट एंगेज इन हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन एंड टू अवॉइड इंजरिंग अदर्स, ठीक है। तो ये है टू ट्रीट ऑल पर्सन्स फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट and do not engage in discrimination based on characteristics such as race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity और gender expression। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप अपना काम प्रोफेशनल करें, आपके सामने कोई भी खड़ा हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी काम के लिए वो आपके पास आया हो, क्योंकि वो आपके पास काम के लिए आया तो आपको उसको बराबरी से, दूसरों की बराबरी से ही तवज्जो देनी है। To not engage in harassment of any kind, किसी को डराना नहीं है, ना sexual harassment है, ना bullying करनी है, ना कुछ करना है, and everything should be with respect. To avoid injuries or injuring others, the property, reputation or employment by false or malicious actions, rumors or any verbal or physical abuse। किसी को आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि if you are making use of cell phone, so you should not make or act like some like that might hurt someone,
उसके जहनी तौर पे उसको इमोशंस को इंजर करे, उसको इमोशनली ब्रेकडाउन की तरफ लेके जाए. Lastly, to strive to ensure that this code is upheld by colleagues and co-workers. ना सिर्फ आपको खुद ऐसे करना है बल्कि दूसरों को भी बोलना है कि वो इस तरीके से इसको बेहतरी की तरफ इस्तेमाल करें और कोई ऐसे काम ना करें जो unethical हो. To support colleagues and co-workers in following the codes of ethics, to strive to ensure code is upheld and not to retaliate against individuals. सही है, reporting a violation. अगर कोई आपके लिए किसी से बात करता है और आपसे कोई ऐसा काम हुआ है तो आप कोशिश ये करेंगे कि कभी भी आप जो है वो उसको इग्नोर नहीं करेंगे. आप उसको इनकरेज करेंगे लोगों को कि वो एथिकली बिहेव करें, और अगर कोई आप किसी को गलत काम करता हुआ देख रहे हैं और आप रोक नहीं सकते तो यू शुड रिपोर्ट ताकि वो रुक सके. तो ये हो गया IEEE के लिए. Now, याद रखें, this is basically pure theory, and you would have to actually remember that these rules and codes are there in your books. Now, thirdly, it comes to Association of Computing Machinery, ACM. The two work hand in hand. Association of Computing Machinery. ACM. All right. So, jointly with the Association of Computing Machinery, the IEEE has also developed a set of 8 principles. किसी भी चीज को लर्न करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप इसमें जो पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये 8 प्रिंसिपल्स हैं. ऑलराइट, ये जो 8 प्रिंसिपल्स हैं ये ACM ने बनाए हैं in association with IEEE. ठीक है. The IEEE has also developed a set of 8 principles which govern the codes of ethics specifically among software engineers. All right. So I told you that ACM works for software engineer, IEEE, whereas work for all the related technologies. The principles set out to ensure all engineers meet an acceptable and consistent code of ethics. There are certain expectations for the scientists and engineers from the general public as well as from their peers. The actual 8 principles behind the code of ethics and professional practices were published back in 1999 और 1999 से ये है. तो आप इसको इंटरनेट पर भी देख सकते हैं ACM का, लेकिन in your book it is a bit short version, तो वो हम देखते हैं. Here we go. IEEE Computer Science or ACM Code of Ethics and Professional Practices. The Software Engineer Code of Ethics and Professional Practice produced by the institution of IEEE Computer Science and Association of Computing Machinery sets as professional standard for teaching and practicing software engineering. It specifies ethical and professional obligations of software engineers and states the standards that society at large expects them to meet and what they should expect of one another. The code also tells the public what they should expect from the software engineer. So that is how हम जो है वो shortened version इसका पढ़ रहे हैं, and this needs to be learned by heart. ठीक है. Other things that we have studied as of yet, you should know about them. Words might be
jumbled and all, but over here, try to remember them as they are. So there are 8 principles. First is public. Software engineers shall act consistently with the public interest. They should not work in a way that might hurt the public. All right. Now, client and employer. Software engineers shall act in a manner that is in the best interest of their client and employer, consistent with the public interest. Again, public interest minded. Product, the product that they are producing. Software engineers shall ensure that their products and related modification meet the highest professional standards possible. Judgment. Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment. They should not be biased. They should not work for themselves. They should not solely work for the organization and harm others. Their professional judgment should be in favor of everyone. उनका कैरेक्टर इंटीग्रिटी के साथ, मोरालिटी के साथ, प्रोफेशनल एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स के साथ जजमेंट होना चाहिए. मैनेजमेंट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स and managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software. We should not be manager ask someone to perform anything which is maybe non-professional. So ऐसा नहीं होना चाहिए. All right. So profession. Be good to your profession. You improve yourself as a professional. Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest. Again, colleagues, not just you. You have got your peers around. You better go with them, ask them, admire them, and back up them for the ethical practices for computers. सिर्फ आपको नहीं करना, दूसरों को. और अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा तो उसको समझाने के साथ साथ रिपोर्ट भी करना है. किसी और का बुरा काम छुपाना भी unethical है. Software engineers shall be fair to and supportive to their colleagues. Self, then comes yourself. Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practices of their profession and shall promote an ethical approach to the practices of the profession. Now, what do we expect in exam? We should expect in exam that we would have few cases. अभी हम देखते हैं कुछ past papers और उनके साथ हम इन 8 principles को मिलाना होगा. ठीक है? Now, what is the impact of your work over the public? ठीक है ना, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं. So it is software engineers code of ethics, and you have to learn all 8 principles must be followed. Alright? और आपको भी ये जो 8 principles है ना, वो याद कर लें. ठीक है जी. अच्छा, अब हम देखते हैं impact on public. अब देखिए हमारे पास जो है, जो सॉफ्टवेयर का इम्पैक्ट है पब्लिक पे, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बीइंग डेवलप्ड
फॉर द जनरल पब्लिक, वो क्या हो सकता है? सबसे पहला जो आपके पास है सेंटर, यस यस एग्जैक्टली हुजैफा, सेंटर में जो है वो है पब्लिक वेलबींग। ये हमारा सेंट्रल आइडिया है कि हमारे पास पब्लिक वेलबींग होती है, सही है। सो वट एवर दैट वी डेवलप शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो अभी हम इसको शॉर्टन कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है, शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑलराइट, it should be the concern of the public, ठीक है। it should benefit to the public, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी भी होना चाहिए। आप देखते हैं जब आप फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास आता है स्क्रीन टाइम, वो अवेयरनेस के लिए है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपको बताता है कुकीज हैं, वो आपकी अवेयरनेस के लिए कि हम कुकीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो आप इसको अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अब गूगल ने बहुत अरसे तक ऑटो ड्राइवर कार बनाई, 11 साल वो कार चलती रही। जब उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट से आने का टाइम हो गया तो एक दिन उससे एक्सीडेंट हो गया। टेस्ला भी बनाती है, सही है। तो अब ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक की वेलबींग के लिए है। अब इसके अंदर कुछ लोग मॉरली कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। सिमिलरली अगर फर्ज करें कि मेरे हाथ पे एक स्मार्ट वॉच है और मैं अपने एम्प्लॉयर से बोलूं कि यार आज मैं बीमार हूँ, ठीक है ना, मैं, या आप इस तरह बोलें कि मैं एक इंश्योरेंस लूँ अपनी हेल्थ की और आई हैव गॉट अ डिजीज, मैं उसको छुपा लूँ और इंश्योरेंस ले लूँ। अब मेरे हाथ में एक हेल्थ वॉच है, ये है स्मार्ट वॉच है, और ये स्मार्ट वॉच मेरी रीडिंग्स लेती है, मेरे ऑक्सीजन का लेवल लेती है, मेरी हार्ट बीट लेती है और मेरी एक्टिविटी लेती है, और ये स्मार्ट वॉच किसी वेबसाइट पे डाटा अपलोड करती रहती है जो कि फिर मेरे दूसरे कंप्यूटर से सिस्टम से लिंक्ड है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी इस वेबसाइट से जिस पे मैं अपना डाटा अपडेट कर रहा हूँ कंसल्ट करे विदाउट माय, वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाए कि वो मेरी मर्जी के बगैर कंसल्ट करे, तो अब आप उसमें खुद सोचें कि मैंने झूठ बोला है, उन्होंने बगैर मुझसे पूछा है, तो एक गलती उन्होंने करी है, एक गलती मैंने करी, तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे सिनेरियोस प्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर आप जो हैं वो अपना ओपिनियन आपको प्रेजेंट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू दोज 8 प्रिंसिपल जो हमने अभी पढ़े। अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं उसमें अगर हम देखें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो और भी इश्यूज भी हैं जो पब्लिक को हर्ट कर सकते हैं। अदर इश्यूज विच कैन अफेक्ट द जनरल पब्लिक और बिजनेसेस को, वो ये भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि मीट ना करता हो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, जिसके अंदर हैकिंग की प्रोटेक्शन ना हो और उसके अंदर सिक्योरिटी के दूसरे इश्यूज हो। एक ऐप तो आप बना लें, उस ऐप में आप लोगों को बोलें आप अपना डेटा मेंटेन करें, लेकिन उस ऐप के अंदर आप सिक्योरिटी फीचर्स नहीं रखें, एंटी हैकिंग फीचर्स नहीं रखें, दैट अगेन कम्स अंडर द सेम अम्ब्रेला ऑफ एथिक्स। तो दूसरा ये, जैसे मैंने आपको एक इंडियन इसकी एग्जांपल दी कॉल सेंटर की, मैंने पढ़ा था ओवर द इंटरनेट कि वो उन्होंने जो है $1 लेके स्पैमर्स को जो है वो ईमेल सेल ऑफ कर दिए थे। उससे पूरे
इंडियन इकोनॉमिक सीन पे इम्पैक्ट बना था। अमेरिकन ने उसके लिए बहुत सारी बातें करी थी। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सो वट एवर, आपको प्राइवेट डेटा लोगों का रिवील नहीं करना है। सोशल मीडिया पे आपको किसी की पर्सनल एक्टिविटीज को पब्लिसाइज नहीं करना है। सही है। so, ये है इम्पैक्ट इसका पूरे का पूरा। So this is more or less something that you have to actually learn in terms of ethics. अब हम आते हैं ethics के बाद copyright यानी कि ownership पे। copyright, alright, ownership के हिसाब से। तो अब इसकी कुछ key terms हैं, पहले हम उस पे बात करते हैं। First key term that we have over here is piracy. अब ये कॉपीराइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया ना कि आपने कोई चीज, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको किसी ने आपसे पूछे बगैर चोरी कर लिया, देख लिया, तो वो उसको हम पायरेसी कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग और मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर मेड फॉर द प्रोफेशनल पर्पसेस एंड कमर्शियल पर्पसेस। ऑलराइट, फिर आता है प्रोडक्ट की। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो आपको उसकी प्रोडक्ट की मिलती है, ठीक है ना? तो आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज यू हैव पेड फॉर दैट सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, सिंस इट इज कॉपीराइटेड बाय समवन, कोई और इसको इस्तेमाल करेगा तो उसके पैसे देगा। सही है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट की को बगैर पूछे कहीं से एक्वायर कर लेते हैं तो ये वाला एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। So what is product key? Security method used in software to protect against illegal copies or use. अच्छा, फिर एक हमारे पास होती है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। Now this free software foundation एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। आप जितने भी गूगल प्ले से या एप्पल की जो एप्लीकेशन की साइट है वहां से डाउनलोड करते हैं, उनमें से बहुत सारे फ्री होते हैं सॉफ्टवेयर। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो फ्री होते हैं। उनका या तो बिजनेस कोई और होता है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो आपको उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है उसके अंदर ये है कि दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर प्रमोटिंग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर गिविंग यूजर द फ्रीडम टू रन, कॉपी, चेंज एंड अडैप्ट। द वर्ड अडैप्ट, giving users freedom to copy, change, adapt, and distribute. Obviously this is all along running, मतलब using the software, ठीक है। गिविंग यूजर्स फ्रीडम टू कॉपी, आप कॉपी करें बगैर मसले के, चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको सोर्स कोड भी वो है अवेलेबल, अडेप्ट कर सकते हैं आप अपनी पर्सनल नीड्स के लिए उसको, और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरों को आगे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फिर हमारे पास एक है ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है offering the same freedom as this free software foundation, but with more on the focus of practical consequences of the rules और rules of sharing। मतलब ऐसे ओपन सोर्स इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप यूजर्स को अलाउ तो करेंगे, लेकिन जब हम बनाएंगे तो भी मिलके बनाएंगे, फ्री में बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, और लोगों को जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के हिसाब से हम उसको अलाउ करेंगे। सो फ्री सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव
are the organizations offering the same freedom as free software foundation, but with more of a focus on the practical consequences of sharing, collaborative software development. All right, so this is basically there are websites where you go, you can present your code and ask others to help you, and they will come and you develop the code. There are so many software which are made this way. Achha. Then comes freeware. आपने ओ लेवल में फ्री सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, ये वही चीज है फ्रीवेयर. ऐसा सॉफ्टवेयर, यस लाइसेंस्ड, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोड हो जाए बगैर चार्ज के, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. जितने भी हम गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं या हम एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं या विंडोज स्टोर से डाउनलोड करते हैं, इनके हमें पैसे नहीं देने पड़ते. ये सारे हमारे फ्रीवेयर हैं. वी कैन डाउनलोड, वी कैन use them, we can refer it to others, we can distribute them, but we cannot adapt it, we cannot change the code. All right, and then comes shareware. Those softwares which can be downloaded free of charge initially, and then after some time you would have to actually pay for it. जैसे आपने एक महीने का ट्रायल लगाया, उसके बाद आपको उसको पे करना होगा, are called shareware. And you can distribute them freely, but you cannot adapt, you cannot change. You can always download, you can copy, you can give it to others, you distribute it, but after some time whoever uses it, after some time they would have to pay. So this is a trial versions होते हैं. तो ये वो है. तो अब हमारे पास जो है, यहाँ से आपको अंदाजा हुआ होगा कि एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. Yes, Zafar, we are talking about it. Software licensing. हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर को दूसरों को अगर इस्तेमाल करने देना चाहते हैं तो हम उसके लिए लाइसेंस क्रिएट करते हैं, चाहे हम फ्री दे रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कमर्शियल लाइसेंस फॉर कमर्शियल सॉफ्टवेयर. ये वो सॉफ्टवेयर जिनके लिए आप पैसे देते हैं और जो है वो काम करवाते हैं या पैसे दे के इस्तेमाल करते हैं. हाउ डज ओपन सोर्स आल्सो मींस डाउनलोडिंग एनीथिंग फ्रॉम एन ऑथेंटिक साइट. हाउ डज ओपन सोर्स मींस डाउनलोडिंग anything from an unauthentic site? Yes, unauthentic sites. You see, if something is coming from a website which is fishy, so it means that first of all it is not legal. Number two, अगर कोई commercial software किसी वेबसाइट से फ्री में आपके पास आ रहा है डाउनलोड करने के लिए, या उसकी प्रोडक्ट की नहीं है, या उसमें आपको प्रोडक्ट की नहीं डालनी पड़ती, तो वो सारा का सारा अनएथिकल है. उसका तो हमें पता है. यू सी, मोरालिटी इज समथिंग व्हिच वी नो दैट व्हाट वी आर डूइंग. इफ यू आर डाउनलोडिंग a software from an unauthentic website, it means that they are not bound by the software licensing from the owner of that initial source. All right. If it is commercial software, then that is totally unethical. लेकिन जैसे हम विजुअल बेसिक 2010 इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दैट इज मेड फ्री. तो हमारे पास उसका लाइसेंस है, वो शेयरवेयर भी नहीं है, वो बस फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को उसकी प्रोडक्ट की कहीं से इधर उधर से पकड़ के आप उसको इस्तेमाल कर लें, दैट इज बेसिकली द बैड थिंग. So commercial software हो गए, which are basically made from the perspective that they will be sold. Whoever uses it, pay for it. Then free software and open source.
We talked about it. एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चाहे सॉफ्टवेयर फ्री हो, ओपन सोर्स हो, आप उसका सोर्स कोड डाउनलोड करके उसको चेंज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी किस्म का कोई ना कोई लाइसेंस उससे मंसूब होता है। तो लाइसेंसिंग है, चाहे वो फ्री के लिए है, लेकिन ऑलवेज है। तो जैसे फ्री जो सॉफ्टवेयर्स हैं, you can run the software for any legal purposes. All right, so we cannot use if it is a software that is freely available, but you cannot make use of it illegally. You can change, you can read the program code and modify it जहाँ पर necessary है to meet your needs. That is again as per the license. You can redistribute copies of the software, but again to someone known and for non-commercial purposes. ठीक है, so this is, or you can always change the क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर कोड, अगर आप उसको अडेप्ट करना चाह रहे हैं। सही है, तो जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स हैं उसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, सोर्स कोड आप उसमें चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो वर्क है उसको इनहेंस कर सकते हैं, और जो भी आप कोड लिखेंगे अगेन वो एज पर द एथिक्स होगा कि आप उसके अंदर जो है वो कोई भी इमोरल और ऐसा कोड जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है वो नहीं लिखेंगे, किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी किसी लाइसेंस के अगेंस्ट करेंगे। सर, इफ वन पर्सन क्रैक्ड अ पेड सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स फॉर फ्री, then who will be involved in this illegal scenario? The person who cracked it, or both the one who cracked it and the user? You see, both. Let's say there are exceptions. In some countries there are exceptions. For example, if there is speed racing, illegal speed racing on a road, so जो ये ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो पता है किसको पकड़ती है? जो सबसे आगे होता है, बाकियों को वो नहीं पकड़ती, पीछे वालों को नहीं पकड़ती। तो उसका रीजन क्या होता है कि उसने मोटिवेट किया तो लोग उसके पीछे पीछे निकले और तेजी से रेसिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो कि इफ समवन क्रैक्ड अ पेड सॉफ्टवेयर और फिर उसको लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया, तो जब आपको एक चीज पता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल आफ्टर पेमेंट बट यू आर एक्चुअली हैविंग इट विदाउट पेमेंट, दैट इज इलीगल। दैट माइट नॉट बी इन टर्म्स के आप उसको, उसके लिए आपको कोई पेनलाइज करे, कोई आपको इम्प्रिजन करे, बट ऑल। लेकिन अमेरिका में व्हाट आई हैव सीन, वहाँ पे लिखा होता है अगर आपके पास से कोई सीडी वीडी निकल आती थी ना, तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने पे नहीं किया और आपके पास पायरेटेड सीडी है वो है, तो आपको फिर वो अंदर कर देते हैं। वो उनकी बला से कि आपने जो है वो खुद उसको पायरेट किया हो या आपने किसी और से लिया। टू मी, the person who cracked it and the person who are using this cracked software, they both are doing illegal activities. That is unethical. So software licensing, we have got free software and open source initiative, and then comes freeware. We discussed about it. Freeware, you can download, adapt, distribute, change, whatever that you want to do. And then we have shareware, where we can download it and use it and distribute it, but after some time you would have to pay for it. तो ये जो है वो shareware होता है। अब एक आखिरी एरिया है आपके सिलेबस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे हार्डवेयर, इसकी जो मेन की टर्म है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। We call it AI, or it's the word of the world nowadays. Everyone, everywhere. It's a machine or application which carries out a task that requires some degree of intelligence when carried out by the human beings.
These tasks could include the use of language, जैसा कि हमने Siri में देखा, हमने Alexa में देखा, हमने Google Assistant में देखा. तो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, किसी से बात करनी है, कोई ऐसा काम करना है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है. लोगों के एक होती है फेशियल रिकग्निशन, लोगों के चेहरे पहचानने हैं, और द एबिलिटी टू ऑपरेट ह्यूमन मशीनरी. जैसे टेस्ला है, वो गाड़ी चलाने का जिसमें सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है. तो ह्यूमन मशीनरी कौन सी है? कार इज अ ह्यूमन मशीनरी, ह्यूमंस ड्राइव इट, लेकिन टेस्ला इज डूइंग इट इटसेल्फ, सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑलराइट. तो और फिर जो डीप लर्निंग है या कंप्यूटिंग लर्निंग है, जिसके अंदर हम डेटा को रीड करते हैं और फिर उस डेटा को कंप्यूटर से रीड कराने के बाद उससे उसकी डिसीजन पूछते हैं, यानी कि प्रेडिक्शन. सही है. तो AI duplicates human tasks requiring decision making and problem solving skills. So artificial intelligence is basically used in software or in machines which requires some sort of intelligent activities, which is basically reproducing human intelligence. So artificial intelligence का कोई particular definition नहीं है, ये मेरी आपसे बात हो गई. और कोई भी ऐसी machine or application which carries out tasks that requires some degree of intelligence when carried out by humans is basically artificial intelligence. तो अब इस artificial intelligence में क्या है, इसका impact क्या है, इसको हमें देखना है. हम जो है ना, ज़्यादातर artificial intelligence को ना साइंस फिक्शन से, फैंटेसी से और रोबोट्स से वो करते हैं, रिलेट करते हैं. तो बेसिकली फिल्मों की हद तक तो सही है, बहुत सारी फिल्म्स और बुक्स भी बनी है. परसों कोई बच्चा मुझसे वो जो रोबोट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सोफिया, उसके बारे में बात कर रहा था. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टॉय है बाय सोनी, आइबो. इट्स अ पेट डॉग, इट्स AI बेस्ड पेट डॉग. ठीक है ना. तो ये है. अब इम्पैक्ट क्या है AI का, वो जो है ना, दैट इज वेल बियॉन्ड यूज ऑफ रोबोट्स एंड ऑल. लेकिन बहरहाल अब ह्यूमन मशीन जैसे टेस्ला इसको इस्तेमाल कर रही है. तो आप देखो, AI इज नॉट जस्ट डुप्लीकेटिंग ह्यूमन वर्क, वो आपस में भी इंटरेक्ट करती है. मतलब अगर 6 7 8 AI बेस्ड गाड़ियां जा रही हैं तो दे विल नेवर कोलाइड बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे नो व्हाट इज हैपनिंग. सही है. सो AI goes beyond robotics, beyond films. सही है. तो उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं. It covers an ever increasing number of areas. अब कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं, हम उसमें देख सकते हैं कि यही टेस्ला वाली ड्राइवरलेस कार्स हो गई. किसी बेचारे का एम्पुटेट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो AI बेस्ड limbs आजकल बन रहे हैं which can substitute for natural limbs. तो after amputation artificial limbs भी apply हो रहे हैं. ड्रोन्स बन रहे हैं जो खुद ब खुद चलते हैं. अभी आपने मार्स के बहुत सारे रोवर्स के बारे में सुना होगा. दे ऑल आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंड दे आर basically sending the data out of Mars, which is basically of great interest for us humans looking in the environment of Mars. क्लाइमेट चेंज की प्रोडक्शंस हैं, उसमें AI इस्तेमाल हो सकती है, FR में इस्तेमाल हो सकती है. आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इस्तेमाल होती है. तो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज. नाउ द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस over the society. This is one particular area which is important. ठीक है. Artificial intelligence and impact of AI over society. So, as a result of increasing automation over the next few decades, human race will need to consider the impacts of AI
on society, the economy and the environment. अब आप देखें environment में तो बेहतरी आ सकती है, लेकिन लोगों की jobs भी तो जाएंगी। बहुत सारे काम जो AI, अब जैसे आपने सुना होगा कि Amazon जो है उसके पास जो distribution system है उनके warehouses में, that is one of the most AI filled automated robotic work ever done for distribution in the world है। उसका मतलब है बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको उनकी जॉब्स खराब हुई होंगी उसकी वजह से, लेकिन अमेजोन का काम इंटेलिजेंटली होने लगा। ठीक है ना, तो increase of AI will leave people with more time and to pursue their hobbies. जैसा कि आप फर्ज करें आप टेस्ला की गाड़ी में बैठते हैं, आई एम अ टीचर, I want to prepare for my next class, so I'll sit in the car rather than driving it. I'll instruct it कि भाई यहाँ पे चलो, अल्फा चलो, ईडन चलो, बीगन चलो, सिटी चलो, रूस चलो, फला चलो, और मैं बैठ के अपना पढ़ता रहूँगा। तो बेसिकली इट विल फाइंड मी टाइम। चाहिए ना, तो improvement in AI technology can have positive impact on the environment. Scientists now have more information than ever about the effect what affects the environment most. AI can help by finding patterns and interconnections within the thousands of the data sets from the environment. इनको ज़्यादा बेहतर अंदाजा होता है कि किन एरियाज से और किन फोकस्ड एरियाज पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, it is predicted that eventually 99% of all jobs could be eliminated since the increase of the use of AI in the market is now exponential. So this exponential usage might lead to loss of jobs. तो अब इसके लिए ये है कि either humans are computer aware, computer savvy, or they might lose their jobs. All right. So AI can help us to conserve natural resources like power supplies and all. अब आपने वो देखा होगा जो वो नल के लगे हुए होते हैं, उसमें सेंसर्स हैं। आप जब हाथ धोते हैं तो उसी वक्त उसमें से पानी आता है। ठीक है ना, such taps which are having sensors, those sensors might be AI controlled. All right. So if someone is elderly and they are moving slow, AI can sense that they might need more time underwater for their hands to be washed than those who are young. उनको कम आएगा, वो जल्दी जल्दी अपना काम करके जा रहे होंगे। कुछ छोटे हैं, AI का इस्तेमाल हर जगह हो सकता है। कंजर्व रिसोर्स करने में भी हो सकता है, कंजर्व टाइम भी। अब जैसे आपके पास गूगल मैप है, वो आपको सबसे शॉर्टन रूट देता है, सही है ना, और वो आपको पहले से बता रहा होता है कि कंजेशन कहाँ से आ सकती है, व्हाट इज द पॉसिबल राउट। लेकिन वो होता तो सब मैथमेटिकली AI के जरिए कंट्रोल्ड है ना। सर व्हाट मेक्स एन AI पावर डिवाइसेस डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल प्रोग्राम डिवाइसेस? सिंपल प्रोग्राम डिवाइसेस आर बेसिकली मेड अंडर अ प्री डिसाइडेड regime, set of rules or known things. अब जो AI है, this is very good question by the way. All must hear about it. Sir, what makes an AI powered device different from the simple program device? This is very good question, Hasib. I actually liked it. This question actually defines the boundary between self-learning and pre-decided program device. अब फॉर एग्जाम्पल एक लॉन मूवर्स जो घास काटने की मशीनें होती हैं, अगर वो एक चौकोर बस है लॉन, तो उसमें वो घूम रहा है लॉन मूवर। लेकिन अगर कोई लॉन जिगजैग है, किसी लॉन में गड्ढे हैं, किसी में ऐसी झाड़ियां हैं जिसमें वो फंस सकता है, तो वो एक दो बार गड्ढे में गिरे और एक दो बार झाड़ियों में फंसे और फिर वो उसको रीड कर ले और उसको वहां पे जाना छोड़ दे, तो ये कैसा होगा? एक में सेल्फ लर्निंग है, एक में सेल्फ लर्निंग नहीं है। एक में सिर्फ ये है कि वो टकराए तो मुड़ जाए, और एक बस उसके अंदर इतना प्रोग्राम हुआ हुआ है। जैसे हमारे पास पहले खिलौने आते थे, दीवार से टकरा के वो मुड़ जाते थे। लेकिन अगर वो साथ साथ लर्न कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, जैसे मैं आपसे एक उसका पेट AI डॉग की बात कर रहा था, द नेम इज सोनी आइबो। सो दैट एक्चुअली इज सो गुड कि अगर इफ यू आर इग्नोरिंग इट, इट विल स्टार्ट एक्शंस
टू गेन योर अटेंशन, वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए ना कुछ स्टोरियां डालना शुरू कर देगा. सो एआई कैन डू वंडर्स फॉर अस. सही है ना. तो व्हाट आर द यूजेस. यूजेस माइट बी इन एडवर्टाइजमेंट. आपके पास फेसबुक वगैरह गूगल ये अपना एआई का बहुत इस्तेमाल करते हैं. आपके पैटर्न्स, आपकी लर्निंग, आपकी इंटरेस्ट को रीड करने के बाद, कंपाइल करने के बाद आपके पास वही एड्स देखते हैं. ट्रांसपोर्ट में इसका यूज होता है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसका यूज हो सकता है. आप एआई बेस्ड पैटर्न्स के जरिए आइडिया लगा सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं, लोगों की हरकत से उनके एक्सपेक्टेड एक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है ना. तो ये है. लिंग्विस्टिक्स में यूज होता है, परसेप्शन में यूज होता है, डिसीजन में यूज होता है, डेटा एनालिसिस में यूज होता है. There are so many uses. Whatever the book that you pick, it will tell you few things कि जहाँ पर AI हम इस्तेमाल करते हैं और इस वक्त हो रही है. ठीक है. मैंने ये भी सुना था कि चाइना के वो रीजन जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हुकूमत समझती है कि उनके फेवर में नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने उनको इस कदर एआई बेस्ड सिस्टम्स के अंडर रखा हुआ है कि वो उनके हर एक्शन को वॉच करते रहते हैं. नॉट एज इन अ पर्सन इज वॉचिंग, as in AI is watching. So any move, they are so intelligent that they learn so much that sometimes they predict a move which is not yet happened. So AI can go to any level. आप देखिए ना, सबसे पहले ये है कि ह्यूमंस जो हैं अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो शिफ्टों में काम करते हैं, वो थकते हैं, वो सोते हैं, वो बोर होते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं. अगर आप एक सिंपल ह्यूमन के लेवल का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम ना भी रखें, लेकिन कोई ऐसा रखें जो मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ बगैर गलती के काम करते रहे, तो उसकी जो थ्रूपुट होगी वो एक आम ह्यूमन के मुकाबले में बढ़ जाएगी. ऑलराइट. सो कंसिस्टेंसी भी तो एक एलिमेंट है जो एआई को हम पर एज दे देती है अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करें. सो एनीवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इज गुड. इट इज इन द बेनिफिट एज वेल एज इट माइट ब्रिंग यू हार्म समटाइम्स. ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम किस किस्म का और अंडर ऑल एथिकल लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. So this is all about our syllabus for chapter 7. It is more of a chapter that require you to study and not to rot learn. Just try to learn those 8 principles. All right. So let's see few of the past paper questions related to this chapter, ethics. जस्ट फ्यू क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद जो है फिर आप छुट्टी कर लीजिएगा. होल्ड ऑन.
अच्छा, ये क्वेश्चंस आप देखिए, दिस इज बेसिकली ओनरशिप ऑफ द डाटा, ये क्वेश्चंस है. So, three types of software licensing and four descriptions are shown in the table below. Put tick mark in each. All right. So, software is purchased before it can be used. That is commercial. Source code come with the software, that is open source. Software is provided free on trial basis, that is shareware. The software can be modified by the user, that is basically open source. All right. Then there is a question. What is first one? Software is purchased before it can be used. Commercial. Commercial. Now, a company needs new software to manage its account. Sir, in commercial, we can also change it. No, we cannot. A company needs new software to manage its account. It is evaluating two different options: source, open source software, and the other one is commercial software. Explain what is meant by open source software. The open source software is basically the source code comes with the software. Source code comes with the software, that is open source. The user can edit the source code. Explain what is meant by the commercial software. The commercial software is purchased with a license which restricts the number of users. सही है ना, इस तरह करके होगा कुछ. The company has decided to purchase commercial software. C. Identify four benefits. उसकी support होगी, उसकी training होगी, उसके साथ manuals आएंगे how to use के, उसका जो मयार होगा, that is basically the best possibly made software ever for that particular source code, वो जो होगा. और उसके यूजर फोरम्स होंगे, दुनिया में बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आपकी हेल्प दूसरों से भी हो सकती है. और इफ देयर विल बी एनी एरर्स, तो वो जो उसका डेवलपर होगा वो उसको उसके पैचेस बना रहा होगा, आपके पास अपग्रेड्स आती रहती हैं, थिंग्स लाइक दैट. अच्छा, अब हम आते हैं एथिक्स में. सही है. अब आप देखें, यहाँ पर आपके पास the ACM, Association of Computer Machinery and IEEE, set out 8 principles for ethics and professional practice. The categories with a short explanation are shown in the diagram. So these are the same as we have discussed. Now they are asking for our opinion. So statement 1, team leader should subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance. ठीक है. Statement 2, software engineers shall practice in lifelong learning regarding the practice of the profession. Statement number 3, software and related modification meet the highest possible standards. तो जो हमारे पास स्टेटमेंट 1, 2 और 3 है, वो यहाँ कहीं ना कहीं से बिलोंग कर रही है. तो these 3 statements need to be added to the diagram. Circle the correct numbers on the diagram to indicate positions for statement 1, 2 and 3. सही है ना. तो जो पहली स्टेटमेंट है, I believe that you should describe to promote ethical approach to management of and the maintenance. This is product. This is product. सही है ना. Product is all statement 1, 2 and 3. This is product. Statement 2, software engineers shall practice in lifelong learning regarding the practice of professions and all. So this is basically
this is basically the product which is 3, ये एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। नंबर 2 जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग, 3 एम्प्लॉयर होगा, इसमें जो होगा मैनेजमेंट है, 1 होगा और सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशंस 2 होगा। Sorry, so this is 3, 1 and 2. Now for each of these workplace scenarios, unethical behavior is demonstrated. Explain the principles which are not being met. Explain the principles which are not being met. The workplace scenario number 1. A large project is devolved to project teams, each led by a project leader. One project leader fails to inform his managers that he has major concern that their team software contribution is taking much longer to write and test than anticipated. They are consequently at risk of spending over their allocated budget. तो ये जो है management at fault, obviously. Alright. So यहाँ पर product के issues भी आ सकते हैं, judgment के issues भी आ सकते हैं. Workplace scenario number 2. The software house is about to train a number of programmers in new programming language. Two employees are refusing to attend and getting training. So this is self-issue, the last one. The staff should be expected to keep their skills up to date. सही है ना? तो अगर उसको नहीं मान रहा तो इसका मतलब है कि वो अपना code of ethics है for the self-improvement उसको fulfill नहीं कर रहा. The company is developing some monitoring software which requires sensors placed in nature reserves. One employee considers the sensors will be danger to some of the wildlife, but is told by his manager that the matter is none of his concern. This is the public interest. We talked about public interest in general. Right? So the employee has good judgment in bringing about this issue as far as his self-integrity is concerned, that is there, but the public interest is basically hurt. So yeah, so this is an issue which is relating to the public interest. So you have these questions and their answers to study them. This is it for